So, namaskar, all of you. My voice is clear, online students. Are you able to hear me? I'm having a sore throat, so just manage with that. Voice Yes, sir. clear? Huh? Yes, sir. Okay, fine. So, we will be starting with jurisprudence. So, before I start in today's class, basically, jurisprudence बहुत गुडे vast subject. Okay. तो जो माने ऑप्शनल हिसाब रे सेटा नौचंती ओके यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक ओके ओजेएस रे हमर कोन कोन सब्जेक्ट्स रु किबा कोन कोन सब टॉपिक्स रु क्वेश्चंस आसुच सेटा आपण को जानिबार अछि आपण को एंटायर जूरिस्प्रूडेंस और लीगल थ्योरी पढिबा दरकार नाही ओके सो दी तीनटा जिंस गोटे तो हला जो प्रिंटेड नोट्स आपण को दिया हिची सेथरे जतिकी मैटर अछि कोर मैटर टा सेटा कवर कर दोछ कोर मैटर टा किंतु गोटे डिफरेंस अपन जे देखिए बाकी सबु ऑप्शनल्स आउ जूरिस्प्रूडेंस भितरे सेटा हैला कि प्राय जूरिस्प्रूडेंस रो क्वेश्चंस करिका जतिकी फैमिली लॉ की आईपीसी की सीआरपी की आपनकर कॉन्ट्रैक्ट करिका रिपीट हुए सेतिकी जूरिस्प्रूडेंस रे रिपीटेशन बहुत कम थाए रिपीट हुए जोटा कि हमें देखिबा बे 10 इयर्स की 12 इयर्स रो क्वेश्चंस तो सेतरे रिपीटेशन अच्छी बट जेहेतु वास्ट एते अच्छी सब्जेक्ट फील्ड टा एते वास्ट अच्छी तो एनी टाइम you will always have a scope of getting a new question okay तेणु jurisprudence रो प्रोब्लेम कौन हुए पिला माने कहीं टिके कम मार्क्स एथरे पांती ओके गोटे तो हला इट इज क्लब्ड विथ कॉन्स्टिट्यूशन तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी ओजेएस को देखिले वी हैव सीन दैट देयर आर ओनली 3 or 4 इंपोर्टेंट एरियाज ओके माने कथाटा हला कि हमको 6टा क्वेश्चन करिवार अछि ओके 6 क्वेश्चंस हमको बेसिकली करिवार अछि एंड you can choose accordingly okay from constitution and from jurisprudence constitution ro fundamental rights duties ଆଉ judiciary ଏତିକି ହେଇଗଲେ ଆମର ଖାଲି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ରୁ ହିଁ ଭଲରେ ପଢିକି ଗଲେ ତିନିଟା ଯାକ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆପଣ ଆନ୍ସର କରିଦେଇ ପାରିବେ ଠିକ ସେମିତି ଟଟ୍ ଇଏ ଆମର ଜୁରିସ୍ପ୍ରୁଡେନ୍ସ ରେ ବି କିଛିଟା ଏରିଆଜ ଆପଣଙ୍କୁ ମାର୍କ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ जोटा की इंपॉर्टेंट अच्छी ओके सो व्हाट बेसिकली आई विल डू इज लास्ट केते इयर्स रो क्वेश्चंस करिका 10 इयर्स रो फर्स्ट मु डिस्कस करिवि बिफोर दैट लेट मी टेल यू अबाउट द बुक लिस्ट ओके नोट्स तो ठीक अछि अपन को प्रिंटेड नोट्स मिल जाउची बट से नोट्स टा कोन गोटे ओवरऑल अपन को एग्जाम रो जोटा मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट से गुडा अपन नोट्स रे पाई जाउछन ओके प्रिंटेड नोट्स रे बट कॉन्सेप्ट टा क्लियर करिया पे टेक्स्ट बुक टा पढ़ले बेटर jurisprudence as a concept जेतु हमर लॉ टा हमें मेनली इंग्लिश jurisprudence रो नेचु और सेतरे अमेरिकन jurisprudence रो भी किछटा पार्ट अछि ओके तो सेति पई हमर जो टेक्स्ट बुक्स उडा रहिला प्राय सबु से इंग्लिश ऑथर्स कर अछि इंग्लिश जूरिस्ट मानकर अछि मु सकाळे आज ग्रुप रे दीटा बुक शेयर करथली ओके सेटा भी अपन यूज करि परिबे बट देन 800 गोटे 800 पेज गोटे 700 पेज एमती बहुत बड़ बड़ ओजेएस रे सेमती रिक्वायरमेंट नाही बट स्टिल देन टेक्स्ट बुक्स लिखि दियंतो बहुत अच्छी लॉट ऑफ बुक्स आर देयर ओके तो आ भीतर दी तीनटा हमें मु जोडा आपको शेयर करली गोटे तो ऑस्टिन को शेयर करची ओके लेक्चर्स ऑन jurisprudence by ऑस्टिन ओके बट एगुडा सब कोन ना कथाटा हला आपको कॉम्प्रिहेंड करिवा मे नॉट बी पॉसिबल फॉर एवरीवन ठीक अछि ताले आपण क्लास रे जा डिस्कस करिवि
क्लास रे जो नोट्स देबी सेतिकी आपन पई सफिशिएंट हे जो आ गोटे सैल्मन भी आपन ओके सेटा भी आपन रेफर करि परिबे आ गोटे हैला एचएलए हार्ट सेटा भी रेफर कर पे हम तो एते तीनटा तो करिवन ना गोटे भी जोटा हेले चलिबो ठीक अछि आउ जदि आपनकर इंडियन ऑथर दरकार जे कि एई तीन जण आउरी भी बहुत जनकर कंबाइंड करके से तंगर लिखिथिबे बुक तो जदि आप इंडियन ऑथर दरकार ताले हमर वी महाजन दैट बुक इज गुड ठीक अछि सेतरे बहुत ही एनालिसिस करके जो आगो बुक्स उड़ा सब सेतर ओके so that is quite good so if you want a textbook you can choose anyone okay this VD Mahajan a boyta this is basically a commentary on these original works okay ହେଲା text so textbooks बहुत जन पचारती को बही आम पढ़ू तो ए तीन टा ओरिजिनल बुक्स ऑस्टिन सैलमन की एचएल हार्ट और भी बहुत अच्छी बट द थिंग इज दैट सेटा मे भी हमर एते दरकार न होई पारे ए तीन टा भितरु मु ऑस्टिन टा आपन को आज दे दी थी ओके ऑस्टिन इज गुड ओके एचएलए हार्ट रो जो अच्छी पीडीएफ दैट इज ए स्कैन्ड पीडीएफ सेटा बहुत ही बड़ लाइक 1.7 के जीबी अछि तेणु सेटा जाउनी एथरे व्हाट्सएप रे ओके बट एनी वन यू फॉलो ओके तार एग्जाम रे जहां इंपोर्टेंट जिंस पड़िबो सेटा आपन को प्रिंटेड नोट रे ऑलरेडी अच्छी प्रिंटेड नोट टे भी सारे देखि देले भी आपन मोर और लेस जान दी परिबे कोन कोन इंपोर्टेंट जिंस बर अछि ओके so next we will see the important okay important तो नो कौन क्वेश्चन पड़ुछि ठीक अछि तो कौन कौन क्वेश्चन हमर पड़िछि 2012 रु आज पर्यंत ताले आपण जानि परिबे कि को टाइप रो क्वेश्चन हमें एक्सपेक्ट करि परिबा ओके so I will just discuss each of the year's question of jurisprudence फर्स्ट 2012 रो स्टार्ट करियो तो एठी कोन ना मु गोटे साइड रे क्वेश्चंस लिखुची आ गोटे साइड रे को डोमेन रो क्वेश्चंस उडा आछी सेटा लिखुची बिकॉज़ दैट इज इंपोर्टेंट काहे कि ना पढिला बेले हमको ता ऊपर कंसंट्रेट करिया पे पड़िबो ओके so these are the questions of 2012 just a minute गोटे काम करची एक क्वेश्चंस गुडा ओके मु ग्रुप रे पे दे दूची सो दैट आपण डायरेक्टली सेउठु ही ताको एक्सेस कर पारे ओके ताले सेटा सुविधा मु स्क्रीन रे तो देखिबी प्लस यू कैन डायरेक्टली एक्सेस फ्रॉम योर व्हाट्सएप
ओके ग्रुप रे देखंतु दे दीजिए सेगुड़ा सो फर्स्ट हमें 2012 रो डिस्कस करू ओके these are the questions of 2012 explain the importance of historical school of law in present day context okay तो साइड रे तार हमें लिखि दबा कोन ना schools of law एटा बहुत कॉमन क्वेश्चन हिस्टोरिकल स्कूल हो नेचुरल स्कूल हो ओके आपणकर सिंथेटिक स्कूल हो ओके आ ऊपर क्वेश्चंस आसुच ठीक अछि सो स्कूल्स ऑफ लॉ एटा गोटे आपणकर इंपोर्टेंट पार्ट रहला तापर सेकंड क्वेश्चन को आसन तापर कोन कहिछि इन द प्रेजेंट डे कॉन्टेक्स्ट ओके हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ लॉ इन द प्रेजेंट डे कॉन्टेक्स्ट पहुंच सो एनीवे सेटा तो हम गोटे गोटे ताको पढिया गोटे गोटे स्कूल पई गोटे गोटे क्लास लागिवो ओके तापर आसिला टू प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस इवॉल्व बाय जॉन रॉल्स सो एटा आसिला हमरा जस्टिस व्हाट इज जस्टिस टाइप्स ऑफ जस्टिस काइंड्स ऑफ जस्टिस फॉर्म्स ऑफ जस्टिस ठीक अछि जो माने पॉलिटिकल साइंस भी तो आपण पढि के जा बेले सेमेस्टर्स रे थिबो तो से जो आपण रॉल्स थ्योरी थिला जस्टिस करि कर से गुडा ओके एंड कंपेयर द रूल ऑफ रिकॉग्निशन ओके विथ ग्रांड नॉर्म ठीक है सो बेसिकली एटा जस्टिस चैप्टर रो आसिला तापरे डिफाइन लॉ डिस्टिंग्विश बिटवीन लॉज एंड मोरल्स तो आसिला लॉ ओके हाउ मोरल्स एथिक्स एटा गोटे तार सब मॉड्यूल पूरा रोच लॉ टाइप्स ऑफ लॉ व्हाट आर द characteristics of law okay what are morals what are ethics how they are different from law बुझ पालो तो सेटा गोटे लॉ आउ morals आपण देखि पारे ओके सो the first three questions then you come to question 4 discuss the importance of precedent as a source of law तो sources of law अपन जेमती हिंदू लॉ रे पढितिले कि एबे मुस्लिम लॉ जोटा सरीला से थरे पढितिले कि हिंदू लॉ रो सोर्स कोन मुस्लिम लॉ रो सोर्स कोन एटा जनरली ओके एनी काइंड ऑफ लॉ रो सोर्स कोन mentions and circumstances which increase the authority of a precedent तो sources भीतर precedent भी गोटे बहुत important source हमर जेंति customary law हैला कि customs हैला कि अपन legislation हैला जेंति precedent ओके आगुरु कोन हेई आछि सो sources एटा का अंडर रे गला sources of law सो नंबर 4 लिखंतु sources of law तो एतरे कोन करिवे ना को रिपीट होची को क्वेश्चन सोडा को वर्ष रे सेटा एठी आपण अरेंज करी करी चलिबे सो एट द एंड ऑफ द 10 वर्ष रो क्वेश्चन एनालिसिस सरला परे आपण जानि परिबे कि स्कूल्स ऑफ लॉ रु 12 टा क्वेश्चन आछि दैट इज वेरी इंपोर्टेंट ओके तो सेई पई दिस इज वेरी इंपोर्टेंट कि आपण को सब्जेक्ट रु को क्वेश्चन आछि केतटा क्वेश्चन आछि दैट इज द रीजन वी आर डूइंग दिस ओके तापर now come to question number 5 and 6 say वर्षर we are discussing 2012 now okay question number 5 and 6 question 2012 so question 5 कोची rights and duties are jural correlatives okay से jural correlatives से गुडा भी से आपनकर sources of law okay mention some characteristics of a legal right okay rights and duties तो एटा गोटे सेपरेट चैप्टर ही अछि राइट्स ऊपर okay types of rights जेंति एटी देला legal right okay tort रे सर आपन को भी पढौतिले ना what is legally right what is morally right okay so types of rights अपन देखिबे limitations of rights रछि तो rights question number 5
Question 6, define the term person and distinguish between natural and legal persons. Mention two circumstances in which beasts may be thought to person's legal right. Okay. So, number 6, এটা notes রে দেখিবে particularly rights under this সেটা সে ଦେଇଛି. Okay, কোন animals. Okay, so both rights and liabilities of animals এটা tort ରେ ବି ଆପଣ ପଢିଛନ୍ତି. wild animal case ରେ କଣ ହଉଛି, owned animal କିମ୍ବା domestic animal ଯାହାର କିଏ ଗୋଟେ owner ଅଛି ତା case ରେ କଣ ହଉଛି. suppose এটা ଗୋଟେ interview question ବି ଏ ବର୍ଷ ବୋଧେ ପଚରା ହେଇନି ବଟ୍ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ପଚରା ହେଇଥିଲା 2-3 ଜଣଙ୍କୁ କି वाइल्ड एनिमल अटैक कला आपण जाउथिले कोठो ट्रेकिंग करिया पई वाइल्ड एनिमल आपण को अटैक कला किए लायबल स्टेट रो लायबिलिटी केते. ओके, वाइल्ड एनिमल अटैक कला आ गोटे से पाखरे कार फार्म हाउस थिला सी गोटे एनिमल रखतिला सी अटैक कला तो तार लायबिलिटी केते. ओके, सो एटा सी गला आपनकर पर्सन्स. ठीक है, दिस इज बेसिकली 2012 रो क्वेश्चन सोडा देखिले आपण. नाउ कम टू 2013. ओके, से आपण को जो फाइल उडा देछि प्रथमे सेथरे ईयर टा लिखाइ छ. दीटा ईयर रे कंबाइन दिया आइतला फाइल. सो आई विल टेल यू दैट. टू 2013 को असंत होबे. तो एतरे सेक्शन बी रु स्टार्ट हिची. क्वेश्चन 7 का देखो तो. Make a comparison of precedent and legislation as sources of law. तेणु नंबर 4 रे आपण sources of law लिखिथिले सेठी आपण ओके ऐड कर दियंतु +1. Okay, which according to you is the effective source and why? Compare करिवे precedent already पढ़ी सारिची 2012 रे repeat ହେଲା precedent, so it is important. Okay, and legislation दीटा को compare करिवार अछि. Right, actually कोन आगुरु आपणकर एगुडा जेमति ना 25 मार्क रो क्वेश्चन पढुछ पूरा 25 मिनिट आपण देबे गोटे आंसर लिखिया पे. Okay, why, which according to you is the effective source and why? तो obviously आपण legislation टा कहबे आ काहे की भी सेटा कहबे, but anyway whatever be the case it is sources of law रू एटा आसेला. Evaluate the contribution of HLA Hart to analytical jurisprudence. एटा आसेला आपणकर schools of okay jurisprudence. ठीक अछि. schools of law गोटे अछि, types of jurisprudence और schools of jurisprudence से अलगा. तो नंबर 7 रे लिखंतु एटा. ओके, टाइप्स ऑफ jurisprudence के schools of jurisprudence आपण कहि पारे. तो एटा हला एचएलए 8 को पचारछि एनालिटिकल jurisprudence. ठीक अछि. तापर क्वेश्चन नंबर 9 को जानतु. Examine the concept of rights in its wider sense of the term as propounded by okay Hoffman. Right, so एटा rights, तो rights से +1 दियंतु. Okay, तापर आसिला who are legal persons. Examine the legal status of dead person and animal. Okay, so number 6 रे जोटा लिखथिले पर्सन सेठी +1 दियंतु. ता माने एटा रिपीट होला फुनी लीगल पर्सन्स. तो एथरे आपण देखिबे 2012 रे जा पड़तिला 2013 रे आ दुटा क्वेश्चन भी अछि. हमरो तीनटा क्वेश्चन सेम ईयर रू रिपीट हिच. ओके, सेम सब मॉड्यूल रू रिपीट हिच.
बाकी दीटा क्वेश्चन रहगला that let us see that. एटा गोटे बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पकेला एग्जैक्टली जूरिस्प्रूडेंस रो डोमेन रो नुह but still then define property, discuss various kinds of property. तो number 8 लिखंतु property. Okay, various kinds of property. तापरे आसिला examine the characteristics of ownership. এটা बहुत important. Ownership और possession से जो chapter टा अच्छी आ उपरे सबु वर्ष गोटे क्वेश्चन आपण एक्सपेक्ट करि परिबे सेम क्वेश्चन के बुले बाले पकेबो जेमति कि लास्ट ईयर पकेतिला कि पोजीशन ओके इज 9/10 ओके द ओनरशिप मींस गोटे लोक पाके यदि पोजीशन अछि ताले ही इज बेसिकली 90% ओनर 9/10 द ओनरशिप तो सेमती ए तरह से पकेची 2013 रे examine the characteristics of ownership, add a critical note on difference between ownership and possession. So number 9 very very important eta सबु वर्ष एटा आपण देखिबे कि 2 वर्ष थरे जे अबियले पडिबो ए चैप्टर टा एटा काई हमें इमति लेखुचो एटा काई हमें इमति करूचो ना see there are around 35 chapters okay जदि मु जूरिस्प्रूडेंस और लीगल थ्योरी दीटा को कहबी 35 खंडे चैप्टर्स अछि कथाटा हला ओजेएस रो हमर जो स्ट्रक्चर अछि जूरिस्प्रूडेंस रो हमकु 35 टा चैप्टर पढिबा दरकार की दैट इज द इंपोर्टेंट थिंग ना हमको दरकार नहीं हमर मैक्सिमम 12 टा चैप्टर भितरे हमर एंटायर जहा दरकार सेटा पढाई परियो ठीक अछि जहा हमर एग्जाम रे पचरा होछि सेति पई आमे 10 वर्ष रो क्वेश्चन एनालाइज करिकि एई फॉर्म रे रखि देले so we know कोठु कोन पढिबार अछि so just take down number 9 ownership and possession एटा प्राय सब वर्ष गोटे गोटे आपण पाइबे तो एटा गला 2013 नंबर 8 jurisprudence property ना कोटा नंबर 8 टा हां नहीं 7 टा हला टाइप्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस और नंबर 8 टा हला प्रॉपर्टी ओके सर थैंक नंबर 9 टा हला ओनरशिप एंड पोजीशन यू सो एटा गला 2012-13 now come to 2014 seventh question है तो देखो critically examine the theory of okay Wolfgang propounded by Savin okay so आरबिया गोटे जिंस हला कि एटा हला legal theories okay so number 10 लिखंतु legal theories Number 8 देखो write an essay on the revival of natural law theory सेटा भी legal theories रे जीवो ओके जो टाइप्स ऑफ लॉ एंड ऑल जोटा में 3 रे लिखथिलु ओके सेथरे भी जाय परिबो natural law theory in 20th century with special reference to view of okay Stambler so legal theory रे +1 करंतो एटा एतले कोन ना अपन देखुचंती
दैट मीन्स बहुत गुडे थियोरिस्ट्स को आपनको पढ़िया पे पड़िबो ओके एटी स्टैमलर करा नेचुरल लॉ थ्योरी रे ओके तांकर व्यूज कोन तांकर कंट्रीब्यूशन कोन सेटा से पचर ठीक सेमती स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस ओके सो एटा जो हमें लिखथिलु टाइप्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस और स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस गोटे अछि स्कूल्स ऑफ लॉ गोटे स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस ओके देइची आपनकर जो मटेरियल रे सेठी देखंतु गोटे टाइप्स ओके ऑफ जूरिस्प्रूडेंस स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस तापर स्कूल्स ऑफ लॉ तो सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस ठीक अछि एटा गोटे आपनकर so schools of law schools of jurisprudence ସେଥିରେ ଏଟା ଯିବ okay so +1 ତାପରେ possession is the prima facie evidence of ownership again repeat kala same question okay so এটা ବହୁତ ଗୋଟେ common question ଆମର jurisprudence ର that is possession of ownership so number 9 ରେ +1 ଆଉ ଗୋଟେ କରି ଦେଇ ପାରିବେ okay ତାପରେ last ଦିଟା question ଏଇ ବର୍ଷର discuss different theories of punishment eta justice re hi jibo okay so theories of justice re ଆପଣଙ୍କ punishment ର theories ବି ଯିବ ଠିକ ଅଛି but still then ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଏଟା justice ସାଙ୍ଗେ related okay related here number 2 but ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ବି ଯଦି ଦେଇଦବା number 11 punishment ଠିକ ଅଛି which theory of punishment do you regard as best theory and why give reasons for your answer तापर आसिला नंबर 12 राइट्स एंड ड्यूटीज आर कोएक्सटेंसिव और concomitant in nature त माने कोन ना राइट्स और ड्यूटीज साइड बाय साइड एग्जिस्ट करिवे ठीक अछि तो नंबर 5 रे एठी आउ गोटे +1 कर दियो कि ताको +2 कर दे पर एमदी 1 1 कले गोटे +2 ओके तो राइट्स संगे ड्यूटीज भी आपण पढिबे सेटा ठीक अछि so this is all about your 2014 okay so now come to 2015 So first question देखो it is said that rights are legally protected interests. Discuss. Okay, the rights ऊपर आसिला. Are there such thing as natural rights? तो rights ऊपर +1 कर दियंतु. So rights हमारा +2 थिला एबे +3 ହେଇଯିବ सेटा. ठीक अछि. Explains Pound's theory of social engineering with help of illustrations. Legal theories रे एटा आपनकर एतरे. Okay, +2. State the shortcomings in the definition of law given by Austin. Both criticism taraj. Okay, that we will see. In fact, we will see that right in the second class. Okay, how far Hart has been able to remove them in his own definition of law. ठीक अछि तो एटा आपनकर बेसिक्स ऑफ लॉ रे आसे जिवो जोटी हमें स्कूल्स ऑफ लॉ मोरल्स ए तरह आसे जिवो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लॉ टाइप्स ऑफ लॉ एगुडा सब ओके एटा भी देइची एई क्वेश्चन ता आपनकर देखिबे 5th की 6th पेज रे 4th की 5th पेज रे आपनकर प्रिंटेड मटेरियल ओके से तरह देखिबे सेटा सो दैट इज तो एथरे हमें +1 कर दे पारे ऑलरेडी 1 तो थिला एटा 2 ओके सो
10th question, distinguish between law and morals. तो ये जो law, moral और ethics हैला ये जो ट्रायो का माने ये जो ट्रायड तीनटा थी ना law, morals और ethics यहाँ ऊपर एक क्वेश्चन भी बहुत थोड़ा अच्छी discuss the views of jurists of natural school of law and positivist school about relation between law and morals. तो এটা जो law morals এটা +3 এটা कर दे ठीक है +3. Explain the characteristics of ownership and also discuss it different kinds types of ownership. Let's say ownership possession re +2. Okay. Briefly discuss the various theories of legal personality. What is the position of unborn child in this regard? The persons, types of persons, personality 80 +2. Okay, legal personality, again corporate personality, different type of personalities. Last year corporate personality. Okay, so it 2015 the questions. Okay. Then next come to 2016. Explain what do you mean by right duty relationship? What is peculiar in right duty relationship in human rights? So rights and duties +3 करथिलु ताकू +4 कर दियंतु. Okay, so that is also a very important aspect एथरा आपण जानि परिबे. Okay, तापरे the natural law theories reflect a perpetual quest for absolute justice. So legal theories re +3. Okay, elucidated. Possession is 9/10 of ownership. Eta phuni a ବର୍ଷ ବି ପଢିଥିଲା. Okay, so same question being repeated so many times. So number 9 re, okay, सेठी आपण +3 कर दियंतु. Ownership re. Okay, so this is first 3 questions of 2016 judge. Let us see the other 3 questions. Question 10 question. The concept of personality is wider than the concept of humanity. Discuss. Differentiate between realistic theory and fiction theory of corporate personality. Okay. এটা এই লাস্ট ইয়ার भी corporate personality পড়ଥିଲା ঠিক আছে তো persons जोटा লিখিଛନ୍ତି ସେଇଠି +3 সেটা করো. Question 11. International law is the vanishing point of jurisprudence. ঠিক আছে এইটা আমি যেତେବେଳେ criticism of the definition of law पढ़िबा ସେଥିରେ ଆମେ ଦେଖିବା କେତେ ଜଣ ଏଇ ଜିନିଷଟା କରିଛନ୍ତି. ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦ କ୍ରିଟିସିଜମ ଅଫ ଅଷ୍ଟିନ ଓକେ ସାଲମନ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଆପଣ କହିପାରିବେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଲ ଗୋଟେ ଅଛି ଜେନେରାଲ ଲ ଗୋଟେ ଅଛି ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଗୁଡା କାମ କରେନି ଏଠି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲ କଥା କହୁଛି ତ ସେଠି ଇଟ ଇଜ ଦ ଭ୍ୟାନିସିଂ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଜୁରିସ୍ପ୍ରୁଡେନ୍ସ କାହିଁକିନା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲ ଇଜ ଭେରି ଭେରି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଓକେ ଆଉ ତାପରେ କଣ ନା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲ ଟା ସମସ୍ତେ ମାନିବେ କି ନ ମାନିବେ ସେଟା ବି କହିହବ ଠିକ ଅଛି ଲ ର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଇନଗ୍ରିଡିଏଣ୍ଟ ହେଲା କି ତାର ଗୋଟେ ଓକେ ଓଭରଅଲ ଅଥରିଟି ରହୁଛି ବାଇଣ୍ଡିଂ ଅଥରିଟି ରହୁଛି ଓକେ wherever law is
implemented or enforced, it is expected that the people who are under that law will accept it. International law रे से जिनसटा न हो पारे. Take for example the law of the seas. Okay, समुद्र रे जो जहाँ भी धरंतु आपण एबे केते सब इंसिडेंट्स हेलानी एबे 5-6 दिन आगु गुजरात रे भी हेतिला गोटे इंसिडेंट कि ईरान रु ड्रोन्स ओके आसिकी अटैक करथिले गोटे शिप. ओके, जापानीज था इजरायली शिप ऊपर जापानीज शिप मोस्टली बोले इंडियन सी थिले क्रू सेतरे. ओके, बेसिक किछ डैमेज हेलानी तो सेठी आउ चाइना चाइना फॉर एग्जांपल तो जो यूनाइटेड नेशन लॉज ऑफ द सीज अछि चाइना ताको टोटली मानुनी. ओके, तो ताको इंप्लीमेंट करे हबो कि फॉर एग्जांपल चाइना पाखे बहुत गुड़े आर्टिफिशियल आइलैंड से बने देछि. एक्चुअली आगुरु समुद्र थिला तो सी कौन कर ताकू बाली बाली पकई ताको आइलैंड सेठी बने देछि जोटा कि तारो जो साउथ चाइना सी रे जो सब अलग देश अछंती जेंति फिलिपाइंस गरिका से माने सेटा इंटरनेशनल कोर्ट को नहीं थिले यूएन रो. नॉट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बट ए जो मैरीटाइम इश्यूज पे से माने कहले कि नहीं एटा चाइना रो नुह तारो राइट्स किछि नहीं तथापि से मानुनी से आउरी करी चलछि. इंप्लीमेंट किए करे सेति पई इंटरनेशनल लॉ इज वैनिशिंग पॉइंट ऑफ jurisprudence. एटा नंबर 12 रे लेखंतु काना एटा गोटे डिफरेंट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन किंबा एक्सेप्शंस टू jurisprudence. ओके, सो इंटरनेशनल लॉ and jurisprudence number 12. Okay, question 12. The movement of progressive societies has hitherto been a movement from status to contract. In light of this observation, discuss the contribution of man. The legal theory or legal theorists एथरे जीव तो एटा +3 थिला +4 कर दियंतो. Okay, so this is all about 2016. Okay, next 2017 और 18 रे आपनकर कंबाइंड क्वेश्चन पेपर ओपीसी देथिले माने जो तो वेबसाइट रे देछि से गोटे क्वेश्चन रे ओके सब जाक पेपर्स दे देछि 17 18 so that is why it is in that form. So just go through that. The term natural law has been applied by different people at different time. Narrate in brief and point out its social relevance. कौन लिखिबा? What is natural law? The types of law रहसला. ठीक अछि, law जो अछि नंबर 3 सेटा को चेंज कर दियंतु +4 करिके. Types of law. Okay, तो natural law. So natural law, natural theories, naturalistic school, natural justice. Okay, ये जो natural लग गला सेटा automatically important है गला. Okay, number 8, write a note on nature and importance of legal possession. तो एटा again number 9, ownership of possession. Okay, +4 सेटा बना that you can put. सर जो लॉ मोरल्स और एथिक्स भी ऐड हे परिबो सेइतरे. हाँ हाँ ethics भी. Okay, these are all interrelated. आमे जेतु जानिया पे चाहूचु कि को चैप्टर्स हमको पढिबार अछि से 35 खंडे चैप्टर्स रो तो सेत पे हमें ताको एमती गोटे चैप्टराइजेशन कर दी Yes, कि yes, एटा yes.
मॉडल रो आसीबो काहे ना 35 टा चैप्टर जंती सेमेस्टर रे जदी भी भलरे पढ़ाई थिबो तो नॉर्मली कौन हुए कि नेशनल लॉ स्कूल्स करी करे से माने कौन करंदी जूरिस्प्रूडेंस को मल्टीपल सेमेस्टर्स रे डिवाइड कर देतांदी ओके तो पार्ट 1 पार्ट 2 एमती करके आपण गोटे वर्ष की मोर देन दैट टाइम रे जूरिस्प्रूडेंस टा पढ़िबे ओके एटी ओजेएस रो रिक्वायरमेंट्स एमती नु हो रिक्वायरमेंट नहीं हाँ 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 हमर एठी बेसिकली जहा दरकार अछि एग्जाम पई हमें तारी ऊपर फोकस करिवे तो फर्स्ट गोटे एनालाइज कर देले हमें जानि परिया कि हां ठीक अछि एति की ब्रॉड ओके डोमेन भितरे हमको रहबार अछि तो पोजीशन टा इंपोर्टेंट the concept of positivism has seen changes with Austin and Hart elaborate. So legal theories, positivistic legal theories showed up. ठीक है +5 17 ଆସିଲା actually legal theory ଟା ସେଇଟା ଗୋଟେ separate sub module under jurisprudence ତେଣୁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ତାକୁ jurisprudence and legal theory ବି पेपर ର ନାଟା ଦିଆ ହୁଏ ओके एनीवे तो এটা ହେଲା 7 8 9 नेक्स्ट 10 11 12 write a note on the theories of nature of legal persons so persons +3 टा +4 कर दियंतो नंबर 6 जोटा 6th कैटेगराइजेशन जोटा मैं करथिलो write a critical essay on pure theory of law the legal theory okay so this would be +6 according to Pound the sociological jurisprudence ensures the making interpretation application of law take account of social facts ठीक अछि तो एथरे आपनकर लीगल थ्योरी रो भी जीवो सोशियोलॉजिकल jurisprudence की स्कूल्स ऑफ jurisprudence रे भी एटा जीवो ओके ये जो टाइप्स ऑफ jurisprudence स्कूल्स ऑफ jurisprudence को जो कि लीगल थ्योरीज रे भी तको पड़ देखि परिबे ओके सो it is +7 we can do it here so this is basically 2017 रो एटा 2018 रे भी ओपीएससी गोटिए पीडीएफ रे सब पेपर्स देथिला so that we can go through that law is the command of a sovereign containing a common rule of life for his subjects and obliging them to obedience okay so এটা definition of law characteristics types ସେଇ ତାରି under ରେ ଆମର ଯିବ okay तो number 3 रे add कर दियम ताको तो 3 ହେଲା +5 write an essay on authority of precedents as a source of law तो sources of law number 4 रे जोड़ा ଦେଇଥିଲୁ there you can add one more explains Kelson's theory of pure law so this theories of law okay साथ थिला that will be 8 तो a pure law okay our natural law
sociological jurisprudence. Okay, maximum हमर कहारी ऊपर पढुचे हमें जानि पारुछु एथरो. Yes, sir. तापरे next last three questions of 2018. What do you mean by ownership? Elaborate its essential elements, how it is acquired. So ownership of possession रे सेठी +5 आपण one more कर दो +5 ହେଇଯିବ. Discuss the importance of precedent as source of law. देखंतु सेम क्वेश्चन केते थर रिपीट हैला बट एठी टिके अलगा जिंस भी अछि. Comment upon its applicability of doctrine of precedent in India. Is Supreme Court bound by its own decision? तो एठी Constitution of India plus ଆମର jurisprudence को okay मिसई किसे पकड़ेला क्वेश्चन, right? So sources of law, one more +3 is better. Discuss the theories of punishment. Okay, जोटा में 11 number रे लिखथलु punishment. Okay, so +2. It actually rights under रे पड़ेबो. से rights संगेरे penalties, duties सबु सेथरे आपनकर जिवो. Okay, so this is basically your 2018 रो. Now come to 2019. एटा देखिबे केतेटा exactly same question आउ थरे repeat हे जाउछ. Question number 7. International law is the vanishing point of jurisprudence. Exact same question. Out thare padla. Repeat. Repeat question. So it number 12 रे जोटा मैं लिखतिलो एटा +2 कलु. Law is social engineering. Explain this with certain illustrations. Again, legal theories, social engineering. Okay, already देखतिलो तो सेटा +9. Custom is to society what law is to state. Elucidate. Explain the requisites of a legal custom. So এটা ହେଲା basically sources of law ର. Okay, तो सेथरे एटा आपण actually if you remember what are the essentials of a okay valid custom आपण पढिचंती कोथरे हिंदू law रे पढिचंती, right? Simply Yes. most of the things would be same. Okay, so that is +4 ଏଠି ଆପଣ ଦେଇଦେବେ sources of law. Okay. Question 10 question to explain the concept of legal right. Also mention the essential elements of legal right. So it rights. Okay, say patta +4 अच्छी तो it +5 ଆସିଯିବ. Examine the concept of possession and ownership. Also explain difference between possession and ownership. तो इटा +6. Number 9 जोटा हमारा serial थिला आउ गोटे बढ़िबो +6. What is meant by vicarious liability? तो इटा कोन ना tort रो question
Okay, direct question it भी आसेला. Explain with illustrious cases when the state is vicariously liable for tortious acts of its servant. Okay, so this is a direct question from taught read about a common question both भी ऐसे exactly. So number 13 में लिख दे परिवार taught. Okay, so এটা গলা ଆପଣଙ୍କର this is 2019 paper of 2019 ତାପରେ 2021 ରେ ଆମର एग्जाम तो है नथिला 21 22 रो ओके 21 22 सेटा एक्चुअली सेही वर्षर ताको सने 21 22 ये कर दैछन्ती सो 21 22 रो देखो क्वेश्चन 7 ऑस्ट्रेलियन थ्योरी of law is more dictatorial than being democratic comment तानी ये कौन कहूची बेसिकली कि तारो जो क्रिटिसिज्म्स अछि ऑस्टिन करो थ्योरी रो ओके ता ऊपर ना बहुत गोटे सिंपलिस्टिक टाइप रो थ्योरी से ओके ये गोटे जनरल लॉ अछि आ गोटे स्पेसिफिक लॉ अछि तो से सी पर्टिकुलर लॉ गोटे अछि तेनु सेटा बहुत गुडे तारो डिसएडवांटेजेस अपन देख तारी ऊपर कहिची मोर डिक्टेटोरियल देन डेमोक्रेटिक ओके तो ये भी आसेला लीगल थ्योरीज अंडर हमर जुबाडा से लीगल थ्योरीज रे सेठी 9 जोटा अछि मेक इट 10 discuss the characteristics of historical school तो schools of law number 2 explain different concepts of legal rights the rights रे एटा 6 एजबो 5 थिला okay discuss the view that though possession is very near to ownership yet it is not ownership sit ପାଇଁ କହୁଛି ନା 9 10th 90% okay not full so ଏଟା 6 ଥିଲା 7 कर दियंतु एटा ownership and possession ଟା ताले कोन रिलेटिवली कोटा बेसी इंपोर्टेंट हम पई हमें फाइनली जेतोले 10 12 वर्षर सरी जीव क्वेश्चन पेपर एनालाइज करिवा तो हमें इजीली सेटा कहि परिबा ओके कोटा बेसी इंपोर्टेंट हम पई तो सेटा पढिला बेले हमें टिके ओके बेसी फोकस रखिबा बट एमती नो कि आपण आगुरु जहा पढतिला सही हिसाब रे धरि कि पढिबे बट एटलीस्ट आपण को यू गेट ए ओके मेनली गेट ए हेड ओके त माने कोनटा एक्चुअली कोडू स्टार्ट करले मते बेटर हो प्रैक्टिकली स्पीकिंग जदि आमे एतिकी सारी दउचु हमर 6टा क्वेश्चन दिया हबो जा भितरु 3टा मु करिवार अछि तो ई जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रो जो जो गुडा हमें बाहर कर देलु केटा इंपोर्टेंट आ हमें ताको सारी देलु 3टा नो 4टा की इवन 5टा क्वेश्चन ता भितरे जदि रिपीट हबो हबो नहले ओके आपण आराम रे करि परिबे सेटा आपण को असुविधा हबन हाउ कैन how can you react on the statement that natural law school is of less importance in modern age despite having its everlasting character तामाने तारा relevance टा एबे अधिका की कम ओके तो एटा legal theories रे भी जीवो schools of law रे भी जीवो okay schools of law रे you can just add it what do you mean by the term source of law
Discuss the place of customs as a source of law. So again, source of law chari thila. This is the fifth one. Eta hela 2021 ର. Now coming to 2022. Discuss Austin's theory of law and point out the limitations of his theory. Both direct out simple question देला एटा. So the theory, legal theories रे जिबो आपनकर. बेसिकली सर एइथ्रु ही माने लीगल थियोरीज रु आसुजी अधिक क्वेश्चन. Legal theories ରୁ ଯାହା ବି ହେଲେ ଗୋଟେ. Okay, schools of law, legal theories ତା ଭିତରୁ ଯାହା ବି ହେଲେ ଗୋଟେ ଆସିବ. ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା କଣ, ଏଥିରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କିଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ବେଶୀ କିଛି କଣ କଣ୍ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଇସ୍ୟୁଜ ଏତେ ପଚାରୁନି. ସେ କିଛି ଜାଗାରେ ଖାଲି ପଚାରୁଛି କି ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ କି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ସାଙ୍ଗରେ କଣ ଇଏ କର, ବଟ୍ ସେଟା ଠିକ ଅଛି ଆମେ କରିଦେଇ ପାରିବା. କ୍ୱେଶ୍ଚନ 8 ଟା ଦେଖନ୍ତୁ, what are jural postulates? Again jural postulates. ଓକେ, ପଚାରୁଛି, ଏଟା ଥରେ ରିପିଟେସନ ହଉଛି. ଠିକ ଅଛି. Discuss the social engineering theory of law propounded by Pound. Okay, so again repetition of the same question. Legal theories रे. Okay, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ social engineering theory ଟା. So ସେଇଟା ବି ଆପଣ you can just add to that legal theories. It actually ଦିଟା ମିଶିକି ପକେଇଛି. Legal theories ରୁ ବି ପକେଇଛି ଆଉ jural postulates. What do you understand by precedent? While explaining different kinds of precedent, evaluate the merits and demerits of precedents as source of law. So this is very very important. ये जो जितने सब हमारा sources of law अच्छी legislation ऊपर होते थोड़े की तरह पकेजी, किंतु precedent ऊपर at least 4 ରୁ 5 थोड़ा पर्यंत पकेजी. Explain the famous dictum of Henry Maine that movement of a progressive society has heritable been from a status to contract. Okay, এটা আউথরে repeat কলা same statement টা মেন কর. Okay, so again legal theories রে এটা. Question 11 টা দেখন্তু. What do you understand by the term liability? While enumerating various kinds of liability, differentiate between civil and criminal liabilities. Okay, तो vicarious liability ऊपर गोटे आपनकर already पढ़िथिला. Okay, तो it say torts under the civil and the types of liability and all. 13. Yes. Okay, so plus 2 एठी कर दे परिया. So तारी भितरे ही liability and everything will be there. Last question है again. Possession is the evidence of ownership unless contrary is proved. While commenting on this statement, define possession and enumerates its kind. So plus 8 एटा आपण कर देबे ownership of possession. Okay, so এটা গলা 2022 এই বর্ষର सी মতে দেইনি রে, but এটা ମୁଁ ତାକୁ ଦେଇଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରୁପ ରେ. let me just check that file. এই বর্ষର ଯୋଉ means ଯୋଉଟା ସରିଲା ଏବେ just. ଏଇଟା ସେଇଟା ହିଁ ଯୋଉଟା ଏବେ ଥିଲା.
ଆମେ actually ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପଛୁଆ ଚାଲିଛୁ ରାଇଟ୍। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ଦେଲେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ସେଇଟା 2022 ପରୀକ୍ଷାର, 2023 ର ନୋଟିଫିକେସନ ମାନେ ଏଟା 22-23 ର, 23-24 ର ଆସିନି। So this one was the last one. Okay, so now let us analyze basically कि ଆମର कौन कौन एथरे पढ़िबार अछि। तो स्कूल्स ऑफ लॉ आसीगला, जस्टिस, ओके, लॉ एंड मोरल एथिक्स एटा आसीला, सोर्सेस ऑफ लॉ वेरी इंपोर्टेंट, राइट्स, ओके, टाइप्स ऑफ पर्सन्स, लीगल पर्सन्स कहला हमकु, नेचुरल पर्सन्स, कॉर्पोरेट पर्सन्स, ओके, एनीवे पर्सन्स सेटा गोटे चैप्टर रहला। तापरे टाइप्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस और जूरिस्प्रूडेंस रो टाइप्स, ऑल दोस थिंग्स सेटा रहला। तापरे आसीगला हमर what it's in that property, okay, and ownership, ठीक अछि, our possession, that is important, ownership and possession, okay, legal theory is very important, maximum question हमें जदि क्लासिफाई करलु जा 13 टा खंडे आउछि लीगल थियोरीज, Legal theories, yes. ठीक अछि। तो लीगल थियोरीज टा सबुठु इंपोर्टेंट से हिसाब रे कहि परिबे। तापरे पनिशमेंट, पनिशमेंट एक्चुअली से राइट्स फैमिली रे टोटली सेटा जीवो, ओके, राइट्स रे आपण किंबा जस्टिस ये रे से गुडा सेथरे पडिबे। इंटरनेशनल लॉ एंड जूरिस्प्रूडेंस सेम क्वेश्चन दी तर पचारची, मे बी आउ भी पचार पारे आउ थरे भी कि इंटरनेशनल लॉ इज द, ओके, फिनिशिंग लाइन और यू नो ऑफ जूरिस्प्रूडेंस ता माने कोन सेटा गोटे। तापरे टॉर्ट्स लायबिलिटी से पार्ट हमर रहिला दी तीनटा पडिची ता ऊपर। सो मोर और लेस दिस इज द स्ट्रक्चर। आमे जेतले बे ताकू गोटे गोटे नै कि प्रिपेयर करिबा, ओके, वी हैव टू कीप दिस इन माइंड। सो हाउ विल वी स्टडी? आई वुड प्रपोज ये जोड़ा मु कहली आपनको से टेक्स्ट बुक तो दीटा मु देची ग्रुप रे, जोड़ा आपन भल लागु, यू कैन फॉलो दैट, और एनी अदर टेक्स्ट बुक इफ यू आर फाइंडिंग इट यू कैन फॉलो, ओके। मु आउ जो प्रिंटेड मटेरियल टा जोटा आपन को मिलिला सेटा गोटे जिनस हला कि सेटा हला कोन आपनकर पूरा एग्जाम ओरिएंटेड पिन पॉइंटेड जिनस देछि, ओके, एग्जाम ओरिएंटेड पिन पॉइंटेड जिनस ही देछि सेटा। सो सेटा कोन सपोज मु तारो जदि स्ट्रक्चर टा आपन को कहबी, जस्ट तो इतना हमर देछि definition of jurisprudence, definition of law and kinds of law, justice and types of justice, sources of law, ठीक है। तो बड़े 25 मार्क रे जेति की लिखिया कथा तार जेते इंपोर्टेंट पॉइंट्स सेटा से देछि। तापर नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ, एनालिटिकल स्कूल, स्कूल्स ऑफ लॉ, इंपेरेटिव थ्योरी ऑफ लॉ, प्योर थ्योरी ऑफ लॉ जोटा 3 थर पढ़िथिला प्योर थ्योरी, हिस्टोरिकल स्कूल, सोशियोलॉजिकल स्कूल, realistic school, okay, then ancient schools, okay, India ru jodi ame dekhe dharma, concept of dharma, okay, तापरे पूरा मॉडर्न स्कूल्स गुडा जेमति कि फेमिनिस्ट स्कूल ऊपर से पकेनी पर्यंत तो पढ़ी पारे बे केना जेतु सेटा एबे, ओके, क्वाइट इन न्यूज। सो फेमिनिस्ट स्कूल करिका से गुडा भी आपण से थरे पाइ जबे, जाट मोस्ट इंपोर्टेंट। तापरे जो सोर्सेस ऑफ लॉ आमे जोटा देखिलु तार आउरी टिके डिटेल देला लेजिस्लेशन एंड प्रेसिडेंट्स, ओके, से प्रेसिडेंट्स ऊपर बहुत क्वेश्चन पड़छि एज सोर्स ऑफ लॉ, एंड से गोटे अलगा पूरा तार सब मॉड्यूल दे दीची कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेयर डिसाइसिस। स्टेयर डिसाइसिस एथर को मु भी पचारथिली इंटरव्यू रे, पिला को पचारा भी हिची इंटरव्यू रे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेस जुडिकाटा, रेस सब जुस्टिस एंड स्टेयर डिसाइसिस, डिफरेंस टा कोन? पाखा पाखी सब तो सेम टाइप रो लागुची, किंतु देयर आर सबटल डिफरेंसेस बिटवीन दीस थ्री कॉन्सेप्ट्स, ओके। दी तीन जन को एथर को पचरा हिची सेटा। तापरे कस्टम्स अछि, देन द राइट्स फैमिली आसिला। सो व्हाट आर राइट्स, ओके, टाइप्स ऑफ राइट्स, ड्यूटी, टाइप्स ऑफ ड्यूटी, रिलेशन बिटवीन राइट एंड ड्यूटी, पर्सनालिटी, डिफरेंट theories of personality, okay, सातटा theory अछि,
different theories of personality, types of personality ଯେମିତି ଆମେ କହିଲୁ ନା ତାର corporate personality, legal personality ସେଇଟା ଅଛି। status of the unborn minor, lunatic, drunkard and dead persons, okay। ତାପରେ corporate personality जोटा कि दी थर क्वेश्चन पढ़िଛି, okay। legal personality, then legal personality of non-human beings, the beast जो क्वेश्चन टा पढ़थिला। तापर आसिला very very important ownership and possession, 8-9 थर पढ़िଛି क्वेश्चन टा। so types of ownership, types of possession, okay, title कौन, liability and obligations, माने प्राय जहाँ जहाँ पढ़ुची आपनकर एग्जाम रे, okay, to the point जिनसटा आपनकर नोट रे अछि। किंतु कथाटा हैला कि what I would suggest is that you know ଆମେ क्लास रे जोटा डिस्कस करिबा, मु क्लास रे जोटा डिक्टेट करिवि सेटा टिके कष्ट करी लिखि दोटा बेटर हो, काहेकि ना एगुडा एटा ठीक अछि। I will do it. Sir, Dhyani is good or not? हाँ, that is also good, okay। But आउरी भी sir, it is quite difficult to understand. so what I will do is I will dictate जहाँ दरकार अछि important ना, मु डिक्टेट ही हाँ कर देबी क्लास रे, अपन ताको लिखि yes देबे, sir. ओके। Yes. आउ सेटा हमरो जो नोट टा दिया हिची, दैट इज लाइक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रॉम ओजेस पॉइंट ऑफ व्यू से हिसाब रे दिछि। ताकू भी जदी अपन भलरे पढ़ी दउछन ना, तीनटा क्वेश्चन तो करिकी ही आसीबे जूरिस्प्रूडेंस रो, ओके। एमति नै कि अपन छाडी Okay, के sir. I will follow that. Yes. ओके। आ बाकी जोटा हैला एमति कि आज हम स्टार्ट करिबा, we will not go to definitions and all, so तो next class रे में करिया what is generally what you mean by jurisprudence and all, ठीक है तो that will see। so I've completed the analysis of last 10-12 year को 2012 ରୁ start कल 23 हेलानी, तो 11 वर्ष कहीं ना गोटे वर्ष हे नथिला, 11 years questions we have analyzed and this is the structure that you have got। एटा आपण लिखि दियंतु, यार गोटे फोटो नै जंतु बुझी परिबे, ओके। त माने कोन, इन अदर वर्ड्स in decreasing order of importance legal theories हे गला हमर मोस्ट इंपोर्टेंट। तापर आसिला ओनरशिप एंड पोजेशन, ठीक अछि। तापर आसिला सोर्सेस ऑफ लॉ एंड राइट्स, तापर आसिला आपनकर लॉ एंड मोरल्स, ठीक अछि। और केबे केबे गोटे थरे दी थरे जो क्वेश्चन उडा पडुची, इंटरनेशनल लॉ जूरिस्प्रूडेंस, टॉर्ट्स, लायबिलिटीज, पनिशमेंट्स, ओके। पर्सन्स इज आल्सो इंपोर्टेंट, ओके। 4-5 थर पड़ी जाइछि, तो हमर ता माने कोन कि जोड़ा कम थर पड़ी कि ताकू भी धरिले हमर 13टा चैप्टर्स अछि कि 13टा मॉड्यूल्स अछि जोटा हमको फॉलो करिवार अछि। ऑल दीज Sir, हैव बीन, एतिकी prepare हेले enough ना? हाँ एतिकी प्रिपेयर हेले मोर देन इनफ, दैट इज द रीजन आई टुक Okay. अराउंड 1 hour टू एनालाइज दिस, ठीक है तो ता माने कोन एतिकी रु आउ गोटे दिटा मे भी अधिक आपन को नोट्स रे देछि। नोट्स इज अराउंड 45 पेजेस, ओके। हाँ सेटा मु धरला पर ताकू आउ मु आउरी बढ़ई भी एक्सप्लेन करिवि, फिगर देबी, सेगुडा हमें वैल्यू एडिशन हमें कर परिबे, बट एग्जाम पे जति दरकार मोर देन इनफ, Enough. okay, got it। so now let us come to the beginning। सेठी तो से बहुत गुडे जिंस देइची, सेटा टेक्निकल डेफिनेशन कोन, what you mean by law, what you mean by jurisprudence, types, kinds, I'll start in the next class। adi generally I'll discuss what you mean by jurisprudence and legal theory, okay, and what are the characteristics, what is the scope and significance of jurisprudence। question के पढ़े नहीं हमारा, but जानिबा दरकार टिके खाली। so I'll just tell you just important things। आ points ही देबी, से points उड़ाई लिखियार अछि। एटा परीक्षा रे पढ़िबार least possibility, परीक्षा रे प्राय पढ़िबनी, okay। but we discuss the significance and scope and nature of jurisprudence, पढ़िबार संभावना कम, right। so generally speaking what do you understand by um, jurisprudence? suppose ame kichi janinu, we are completely new, so what do you understand by jurisprudence? So jurisprudence is the philosophical idea of law. Hmm. Okay,
Then, okay, anyone else? I'm not asking for the I'm not asking for the technical definition. Okay. What do you understand by jurisprudence? देखो ଆମର philosophical side of law. Okay, simple ଭାଷାରେ କହିଲେ suppose ଆମେ ଯୋଉଟା ତ ଆଇପିସି ଆପଣ ପଢିଲେ ସିଆରପିସି ପଢିଲେ ଓକେ ତ ସେଗୁଡା କଣ these are very provision specific. ଓକେ ଏଇ ସେକ୍ସନ ରେ ଏହା କରାଗଲା ବଟ୍ କାହିଁକି କରାଗଲା ତା ପଛରେ କାରଣଟା କଣ okay that means it's the philosophy in a sense in a very loose sense it is the philosophy of law ଠିକ ଅଛି ତ ଆପଣ ଲ ଯେତେବେଳେ ବନଉଛନ୍ତି ଏକ୍ସିକ୍ୟୁଟ କରୁଛନ୍ତି ଏନଫୋର୍ସ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି why okay ତ ସେଇଟା ବେସିକାଲି ଆପଣଙ୍କୁ philosophy okay the philosophy behind a legislation or not only legislation any piece of law ବୁଝିପାରିଲେ so just generally speaking that is what is jurisprudence philosophy behind law simple ଭାଷାରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖିବାର ଅଛି okay so take down heading ଦିଅନ୍ତୁ jurisprudence so take down first in general it refers to the just upon ଯଦି ପୁରା ବି ତାକୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି what you can do is just you can write that okay philosophy of law in very loose terms ତାପରେ ତ jurist ମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜ ନିଜର ଯାହା ବି ସେ okay ଦେଇଛନ୍ତି in fact ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଇକି ଦେଖିବା types of jurisprudence there also you will find one branch of jurisprudence which is philosophical jurisprudence ठीक है तो ये बहुत जन agree भी करते हैं कि it is not actually the philosophy of law but for a layman just to understand okay ଆପଣ କହିପାରିବେ it is okay in a sense the philosophy of Philosophy law behind law. Okay. ହଁ okay ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିପାରିବେ କଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜୁରିସ୍ପ୍ରୁଡେନ୍ସ ଟା କାରଣ ତାର ତ ଡେଫିନେସନ ଆମେ ସବୁ ଜୁରିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଦେଖିବା ତାଙ୍କ ଡେଫିନେସନ ରେ କଣ କ୍ରିଟିସିଜମ୍ସ ଅଛି ସେଇଟା ବି ଦେଖିବା in points okay ସେଇଟା ମୁଁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆଜି ମୁଁ jurisprudence କଣ generally what are the characteristics or the features of jurisprudence ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ କଥା ହେବି okay so take down next point in general terms it is defined as the study and theory of law defined as the study and theory of law okay next objectives of jurisprudence মানে aims কোন okay what are the aims and objectives of jurisprudence
आपण पूरा लाइन न लिखिले भी जस्ट खाली पॉइंट्स लिखि दियंतु, that will also suffice. Okay. Understanding the nature of law. Understanding the nature of law. A. eta. B. Understanding the processes of law. Understanding the processes of law. Number 3, understanding the principles of law. And number 4, जोटा कि most important, social relevance of law. Okay, social relevance of law. तो law टा आपण बनेले society की सेटा केमिति affect करूची, how it is affecting the society, social relevance, how it is relevant for the society. Okay, social relevance of law. Okay, so eta gala tara objectives of law. Okay, so next come to nature and scope of jurisprudence. Nature and scope of jurisprudence. Okay, first come to nature of jurisprudence. Nature of jurisprudence. Number 1, it is the theoretical study of law. Heading दियंतु nature of jurisprudence. Only remember the points. हैला points मने रखंतु, point रो explanation आपण नीचे कर परिबे, आपण concept टा बुझियो. Okay, तो number 1 हैला theoretical study of law. So it studies law as a theoretical subject. ठीक अछि. And for example, हमें आगु को जदि देखिबा सालमन करे डेफिनेशन देखिबा अलगा, तो सेठी हमें देखु कोन ना सेमन तको बहुत जण तको साइंस बढिया भी नहीं चंती. Okay, very systematic study. So basically it is a theoretical study of law. Okay, number 1 सेटा हला. तो तार theoretical base टा केमती अछि, गोटे गोटे लॉ टे आपण बनौचंती, तो what is the reason कोठु सेटा इवॉल्व कला कोन. Okay, all these things. तो theoretical study of law, first point. Second हला जोटा कि हमें तार general definition रे देतिलु, it is the philosophical aspect of law. That is, it is a philosophical inquiry. Okay, why philosophy कोन दर्शन, दर्शन शास्त्र कहउछन ना, philosophy की जे philosophy रे कोन हुए कि something is happening, why it is happening, that thing may be जोटा एक्चुअली होउची किंबा जोटा आगु को हेई पारे. ठीक अछि. सो नंबर 2 सेकंड पॉइंट हला, इट इज अ फिलोसॉफिकल इंक्वायरी. सो फर्स्ट हला थियोरेटिकल, सेकंड पॉइंट हला ओके टेक डाउन फिलोसॉफिकल इंक्वायरी. philosophical inquiry, just खाली heading सुड़ा दियंतु, that is the philosophical inquiry. Okay, third point को असंतु, that is the nature of jurisprudence रो third point टा multidisciplinary approach. एटा हमें पढ़ी भागु एई क्वेश्चन हमरो केबे पढ़िनी, किंतु आपनकर सेमेस्टर्स रे एगुडा पढ़े, जेंति कि discuss the relationship between jurisprudence and sociology, jurisprudence and psychology, jurisprudence and history, jurisprudence and anthropology. एमिति भी questions. Okay, semester exams हम syllabus रे उड़ा था. Okay, jurisprudence
is not a completely theoretical field. Multidisciplinary एथरे sociology रू भी अपन नेले, history रू भी नेले, sciences रू भी नेले, right? So number 3, multidisciplinary approach. Multidisciplinary approach. बुझिपारे ता माने कोन? That means it is not a monotonous subject which derives from only one field. Okay, it derives from multiple fields. ठीक है जी? जेमति कि हमें कहलु सोशियोलॉजी हे गला, साइकोलॉजी हे गला, lot of other fields are also history हे गला. Okay, number 4, fourth point लिखंदो. Analysis of legal concepts. जहाँ भी अपन legal concept, तो let's say retributive justice कथा अपन कहबे, तो सेटा को जगह दरकार, काहे की सेटा important, काहे की सेटा जते कम यूज करले भलो. Okay, analysis of legal concepts. Number 4. Analysis of legal concepts. तापरे number 5, fifth point लिखंतो. Normative aspect. Okay, normative aspect. You know what is normativism or what is? I'll tell you. Normative comes from the word norm. Okay, what do you mean by norm? कि ए जिनसटा आगुरु हेई आसुची. Okay, ए जिनसटा आगुरु हेई आसुची. तेणु गोटे kind of, there is kind of a sanctity. Okay, जेतु हेई आसुची दिन हला, तो that is the norm. सेटा ही आगुरु expect करा होची हबो. ठीक अछि? Kind of, the word norm will be more powerful than precedent because maybe religious reasons, maybe other reasons, it has some kind of sanctity. Okay, ता संगरे किछि sanctity, okay, सेटा associated अछि. ठीक अछि? So normative aspect. तेणु कोन होछि ना, हमरो norms करिका जोडा रहउछि. Okay, they basically deal with questions like what should the law be like, कौन होबा उचित, rather than जोटा कि realistic theory कहउछि कोनटा अछि. Okay, what is the situation now? तो एउठु हमें कोन कर परिबा. But normativism or norms or okay, जो हमरो normative aspect रहउछि सेथरे हमें एया देखु छु कोन होबा उचित, what ought to be. So एतरे morals आसी जाउछि, ethics आसी जाउछि. Okay, so let's say हमें कहबा law should be same for everyone, law should be accessible to everyone. सेटा actually होउछि कि सेटा होउनि. Law is not accessible to everyone, at least reality रे. Recently गोटे जिंस एबे just 4-5 दिन आगुरु हमर हाई कोर्ट जो एएसओ केस गोटे चलथिला, तो ता ऊपर गोटे हमर रूलिंग टा आसिला, जजमेंट टा आसिला. इनिशियली गोटे सिंगल जज बेंच जा कहिथिले, तो एबे ताकू आपनकर लार्जर जज बेंच सेटा खारिज कर देगी. दे गिव ए डिसीजन. नाउ दो स्टूडेंट्स, ओके, जो माने से माने चाहतनी सुप्रीम कोर्ट जीवा पे, बट accessibility नहीं. जहारो इच्छा जीएमए से तो पळेबनी सुप्रीम कोर्ट. Okay, although now it is their right and they want to go but they are not able to go. काहे कि पैसा नहीं पाकर. ठीक अछि? One of those persons ही मनमसन कथा होतले, से कहले just to file they have arranged a कने एते पैसा तो नहीं बड़ लॉयर को दबा पई, तो एठिकार जे लॉयर अछंती जने तांको अरेंज करछंती, से बहुत नॉमिनल चार्ज रे सेठी जाइगी. ओके, तांको साइटटा रिप्रेजेंट करिवे. किंतु ये जति कहउछनी मु पैसा नेबी टोटल केस टा करिया पई, सेठी जे एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जे अछि, जे वकालतनामा रे साइन करिवो, सिए ताटू बेसी पैसा मागुछि. तो ये पिला
पचास षाठी अच्छा ओके ऑल आर अनएम्प्लॉयड ऑब्वियसली से एम्प्लॉयमेंट खोजुଛନ୍ତି ଏମାନେ କୋଉଠୁ ଆଣିବେ ପଇସା ତେଣୁ although ଆମେ legal aid ये से बहुत ଜିନିଷ କହୁଛୁ but actually it is very difficult okay to access the judicial remedies especially when it is going to the higher courts तो ଯାହା ବି ହଉ so ଏଇଠି ଆସିଗଲା ଆପଣଙ୍କ normative aspect okay what justice should be what it ought to be कौन हवा उचित okay तो normative aspect रे ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଲେଖିବେ just use only this much that what ought to be कौन हवा उचित that is the main central question of the normative aspect okay तापर number 6 लिखंतु descriptive and prescriptive elements descriptive and what are these descriptive and prescriptive elements descriptive element माने हैला describe करिवो ठीक अछि लॉटा कोन होबा कथा केमती होबा कथा prescriptive माने it prescribes okay solutions की जा भी हैला so both descriptive and prescriptive okay so descriptive just describes what the law is prescriptive just like doctor gives you prescription okay that what are the things which should be done to make it better okay that is prescriptive descriptive and prescriptive elements तापरे seventh component तारो जोटा कि सबुटु important critical analysis critical analysis critical analysis कौन ना जहां भी अपन jurisprudence will analyze every process aspect of law okay with a critical point of view means एथरा आउ कोन ठीक हे परिबो एथरे कोनटा असुविधा अछि ताको अपन केमति ठीक कर परिबो okay so critical analysis which is very important for justice because society is changing according to the change in society your laws also have to change okay so jurisprudence has to be okay critically it has to be critical एबे जो लॉ अछि तदरे कमजोरी कोन अछि कोन आउ चेंज हो so save through bar number 8 dynamic and evolving okay is satata point likhile you have written all this I'll just change the slide dynamic and evolving static to no okay point number 8 is dynamic and evolving static no kimba final bi no aji ja law ta achi situation change hela law change hobo auri better hobo evolve karibo okay so jurisprudence is dynamic and evolving nature of jurisprudence okay next point number 9 universal and contextual elements universal point number 9 universal and contextual elements कौन था माने universal and contextual elements universal माने jurisprudence principles which are same all around the world okay contextual elements means को जगह रे depending on the culture the context in that area things will be different for example let's say in some countries of Europe and in some islands, in some Buddhist countries, killing of animal is prohibited. You cannot kill animals in Kichita areas. Okay. But in other places, that is allowed. There are certain customs which are not allowed in one country,
but they are allowed in other countries. ସେଟା ହେଲା ତାର contextual element, culture specific. Okay, so universal and your contextual elements. और last point लिखंतु interpretative framework. It provides the framework for interpretation of law. Point number 10, interpretative framework means it provides the framework to interpret laws. Okay, that is the work. So এটা গলা nature of jurisprudence. You take 1 minute, go through all these 10 points. जोटा भी बुझी पारनांती सेटा पचरम. Sir, point number 6. Descriptive versus prescriptive elements. Okay. You can just the side description what the law is. Okay, what the law is means let's say ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ଯୋଉ ଆମର ନୂଆ laws ଗୁଡା ଏବେ ତ law ହେଇଗଲାଣି କାଲିଠୁ ଠିକ ଅଛି ସୋ ସେଥିରେ କଣ ହଉଛି ନା ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କଣ description ଦିଆଯାଇଛି ଓକେ ତାର bare act ସେଟା describe କରୁଛି ସେଟା ठीक है what the law is जदि आपण जस्ट खाली ताको गोटे phrase रे define करिवे description means what the law is prescription means okay what the law should be or what the law ought to be ठीक है कौन हबा दरकार सेटा prescription to prescribe something जेमति कि आपण कहउचंती मते गोटे टेक्स्ट बुक प्रिस्क्राइब करंतु So someone ki doctor kara prescription anuchandi. Doctor tells you to be fit, you need to eat this. Okay, take these medicines. So prescriptive or prescription mane hela ei case re what the law should be. कौन कौन तार असुविधा अछि कौन तार लैक्यूना अछि सेटा कौन होबा दरकार description माने एबे कौन अछि along with its lacuna and everything बुझिपारे डिफरेंस description और Yes, sir. prescription भितर Thank you. yes anyone else any other doubt in these 10 points এটা ହେଲା nature of jurisprudence next heading दियंतु scope of jurisprudence scope of jurisprudence scope अर्थ कौन scope means jurisprudence basically जो काम करिवो कौन काम से करिवो ठीक है स्कोप माने बेसिकली व्हाट यू मीन इन जनरल टर्म्स ओके whatever work you are doing ठीक है तो केते पर्यंत आपण सेटा करिवार अछि किबा to what extent okay you have to do the work धरंतु आपण गोटे घरटे कंस्ट्रक्ट करछन आपण कॉन्ट्रैक्टर को कहि दिजन मते एया दरकार से दरकार एमती घर होबो सेमती घर होबो you give him a scope of work see you have to do this much that much you know इतिक बस ताटो अधिका करिवनी so that is basically
ओके द स्कोप आपण देखिए जेमती जुडिशियल कमिशंस थांती कि कोर्ट्स करिका थांती सबरो गोटे गोटे स्कोप थाए ठीक अछि जोटा कि हमें jurisdiction भी हमें केवे केवे कहूछु okay so scope is also like that means a particular domain की subject ये को जिनस ऊपर फोकस करी so take down scope of jurisprudence heading next है scope of jurisprudence after nature of jurisprudence scope of jurisprudence the first point से थल्ले कौन दो we'll discuss the points you just write the points pointer explanation देखिए दरकार नहीं okay so हमें तो first to कही ना nature of jurisprudence that it is interpretative okay discipline interpretation में कौन we are trying to understand the concepts so number one तारा first और most important scope है to understand okay the concepts behind law so number one understanding legal concepts and principles सेटा तारा first scope understanding understanding legal concepts and principles. Just okay. So understanding legal concept and principles. It is first. Okay. Scope. Second, analyzing legal systems and structures. Because in different countries, in different societies, it will be different. Analyzing different analyzing different legal systems and structures. ଯେମିତି କି ଧରନ୍ତୁ retributive punishment ଯୋଉଠି ଆପଣ retribution let's say କିଛି countries ଅଛନ୍ତି ସେଠି ତାଙ୍କର law ହେଲା କି if you steal or if you do anything wrong ସେମାନେ ବହୁତ ହି like ଆପଣଙ୍କ ହାତ କାଟିଦେବେ ଏଇ ଟାଇପ ର ଜିନିଷ କରିବେ ଓକେ public hangings ଥାଏ ଏଗୁଡା ସବୁ ଥାଏ ଆଉ କେତେଟା countries ରେ even ଆପଣ murder ବି ଯଦି କରିଛନ୍ତି ସେଠି death penalty ଦିଆ ହବନି European Union for example okay so there are different types of legal systems and different types of legal structures okay so lot of things are there for example तो हमारा अबे दरकार नहीं but if you are interested in many countries like जोटी की sharia law follow हुए Saudi Arabia हला other countries तांकर सेठी कोन their laws are generally absolutely skewed against the woman okay एते skewed laws थाए जेमति की the laws for sexual assault against sexual assault rape etc ସେଥିରେ କଣ ହୁଏ ନା ସେ जो the punishment जो दिया हुए maximum punishment is given to the victim only okay तो जेमती गोटे गोटे famous case last year ର ଥିଲା
हस्बैंड कौन करछि ना से एलेज करछि कि ए लोक मो वाइफ संगरे ओके तार किछि फिजिकल रिलेशनशिप अछि ओके एंड से ताकू केते 100टा चाबुक पड़ला एमती कोन ताकू बहुत ये कले का को से जो लोकोटा बट द वाइफ वाज बिहेडेड ठीक है तांकर से बिहेडिंग वेडिंग एबे भी तांकर चले माने accepted that is one of the accepted types of punishment in their country anyway तो तामाने कोन डिफरेंट लीगल सिस्टम अछि डिफरेंट स्ट्रक्चर्स अछि ओके तो तारा एनालिसिस नंबर 3 philosophical analysis of law ओके philosophical analysis माने इज इट करेक्ट आ पछरे कोन अछि philosophical analysis of law नंबर 3 एक्चुअली फिलोसॉफी रे बहुत गुडे हमर जेंति इंग्रेडिएंट्स पढुछु ना तो मेटाफिजिक्स एटिमोलॉजी एक्सियोलॉजी एगुडा सब थाए दीज आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ एनी फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल हमर दरकार नै लॉ रे सेगुडा जानि तांतो एटिमोलॉजी एक्सियोलॉजी आउ मेटाफिजिक्स ओके एडा मेन जनरल ता माने कोन इट बेसिकली डील्स विथ ऑल द फाउंडेशन लेवल क्वेश्चंस why this is being done ए जिनसोडा कले लाभ कहार हबो सेटा हैला philosophical analysis of law okay number 4 legal history examination so examination of the legal history की good example हम नहीं परिबा you write first examination of legal history ओके लेट्स से ओडिसा रे आपण कहबे एठी हमर जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम थिला ड्यूरिंग द मुगल्स देन ड्यूरिंग द ब्रिटिश ओके तार आपण गोटे लीगल हिस्ट्री देखिबे ओके सो एग्जामिनेशन ऑफ लीगल हिस्ट्री तापरे पॉइंट नंबर 5 टेक डाउन कंपैरेटिव लीगल स्टडीज ए जगह रे एमतिया लीगल सिस्टम थिला से जगह रे सिमतिया लीगल सिस्टम थिला comparative legal studies comparative legal studies number 6 law and society interaction law and society interaction okay society or law केमती interpret करछे let's say there are certain laws which is strongly objected by the society ताले कोन rules or laws हो आस्ते आस्ते सेटा ताकू गवर्नमेंट को देखि कि चेंज करिवार अछि फॉर एग्जांपल सी all laws okay कि rules are made with a particular objective केबे केबे कोन हुए से इंटेंशन ता भलो थाए लॉ टा बनेबर कि रूल टा बनेबर बट सेटा से हिसाब रे कार्यकारी हे पारे बेस्ट एग्जांपल आपण देखंतो एबे पूरी जगन्नाथ मंदिर रे ओके आगुरु कोन थिला जेतबेले चारटा द्वार रु लोक माने समस्त आस्थले तो जेते भी लोक थिले आपण केबे भी गोटे स्टैम्पीड लाइक सिचुएशन ओके गर्भगृह भितर केबे भी हुए किछि रेस्ट्रिक्शन नथला जी जुआडे जे जो द्वार रु से माने असुतले एबे ताको स्टैंडर्डाइज करिवा पई ताको गोटे प्रॉपर चैनल रे ताको ए करिया पई आपण माने सब लाइन धरिका कर देले तो एबे कॉन्सिक्वेंस कोन हला ना फर्स्ट तो बहुत अधिका समय लागुची लोकन को नंबर 1 सेकंड दिन सो हला at any point of time आपण गर्भगृह पाखरे से जोटी चढ़िया पे सिटी सब गोटे स्टैम्पीड लाइक सिचुएशन रहउची ओके सो ऑल्दो इंटेंशन भलो थाई पारे बट एग्जीक्यूशन आउ जहां भी हो सेटा भूल हे गला राइट तेनु जूरिस्प्रुडेंस ता से जिंसडा देखे कि लॉ लॉ टा एक्चुअली कहा पई होची खाली ब्लैक एंड व्हाइट रे लिखिया पई तो आपण लॉ बनो रहती टू हेल्प द पीपल लोक माने जो माने से लॉ अधीन रे रहिबे से मानको जेमति मैक्सिमम बेनिफिट होची
So the interaction between law and society. Number 6. Number 7, it already हमें देखी चुकी nature में critical evaluation of law. Critical evaluation of law. Third, law, what is missing in that law? असुविधा कौन अच्छी से law रे critical evaluation. ସେଇଟା ସବୁବେଳେ jurisprudence. Okay, କରିବ. Then next, number 8, normative theories of law, which already we had seen in the nature. Number 8, normative theories of law. Normative theories of law means what law ought to be. कौन होबा दरकार law टा, कौन अच्छी नुह, कौन होबा दरकार. Okay, that is number 8. तपरे take down. Number 9, legal education and research. एटा तार scope रे आसुची. Under the scope of jurisprudence, legal education and research. Our last point, number 10, that is the scope of jurisprudence, influence on legal practice and policy making. Influence on legal practice and policy making. Okay, so just go through all these 10 points. If you have any doubts, you can ask. Nine. Okay. So we'll stop here then. Next class रे हमें continue करिबा with the characteristics and then we'll go to the definition. जोटा देइछि आपनकर material रे salmon को कहिचंती कि. Okay. All others what they have. Austin गरिका को कहिचंती सेटा अपन सेतबेले देख पारे. Okay. After next class, I will give you the questions to write. आज actually exam oriented question किछि लिखिबार नाही. ठीक अछि. एटा फंडामेंटल आपण को जानिबार अछि जिंसडा. एटा किछि क्वेश्चन केबे भी पडिबोनी एग्जाम रे कि डिस्कस द नेचर एंड स्कोप ऑफ jurisprudence. But you should know आपण बेसिक जिंसडा जानिबार अछि. ओके. आजिर मेन काम हैला आपण जो नोट्स रे बिकॉज़ एटा तो प्रीलिम्स रे नाही आउ कंपलसरी पेपर्स रे भी नाही. इंटरव्यू रे जदि पचारला अलगा था unless you are taking constitution and jurisprudence as optional paper ताले सेमती किछि एता इंपोर्टेंट आपण न रहि पारे. बट जो माने नेबे ऑप्शनल हिसाब रे आपण को कोन करिवार अछि ना जेमती हमें आज फर्स्ट स्लाइड रे जेमती ताको डिस्कस कलु. ओके. को डोमेन रु केते क्वेश्चंस आसुची को चैप्टर्स हमर इंपोर्टेंट तो ए स्लाइड टा दिस स्लाइड इज मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट. ओके. तो आपणकर जो खाता रे आपन निजर पर्सनल नोट्स बनेबार अछि बिकॉज़ जतले रिवीजन करिवे से पर्सनल नोट्स टा ही बेस्ट. ओके.
तो ସେଇ ଥରେ ଫର୍ଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମଡ୍ୟୁଲ୍ସ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଚାପ୍ଟର୍ସ ରେ ଏଗୁଡା ଲେଖି ଦେଇଥିବେ ଓକେ fine then we'll stop here okay Thank you, sir. thank you